टू सूट्स। ये एक्चुअली में सिविल प्रोसीजर कोड का सीपीसी का ऑर्डर नंबर 1। तो आज हम ऑर्डर नंबर 1 का 1 to 7 रूल 1 to 7 डिस्कस करेंगे। इस स्लाइड में और डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू नो व्हाट इज पार्टीज टू सूट। Whenever we file any case or any suit or file any plaint within a case, then there is always two parties in a suit. मतलब कुछ भी होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी, अगर कोई भी इंस्टेंस हुआ है, वहाँ पर दो पार्टीज का होना जरूरी है। फर्स्ट वन इज plaintiff who file the plaint and second one is the defendant। दूसरा रहेगा defendant who actually who is actually against whom the suit is filed, जिसके अगेंस्ट सूट फाइल है। तो एक बेसिक है, ऑर्डर 1 हमें बताएगा कि पार्टीज क्या हैं, किस किस को पार्टीज कौन कौन बनेगा, who can join as a party and who can make as a party and who can be joined there, who can be misjoined there। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसमें ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, वो सारी चीजें छोटे छोटे बताएंगे, और हम कब फाइल कर सकते हैं, तो वो सब हम ऑल दिस डिस्कशन वी विल गो और डू थ्रू दिस presentation parties to suit, or it is a present in two parts। So let's start with order 1। So first one is from the part or side of plaintiff। तो जो रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 आर linked with one another, एक दूसरे से लिंक है। So what rule number 1 indicates? A person who may be joined as a plaintiff, who may be joined as a plaintiff। कौन कौन plaintiff की तरह join कर सकता है? So the person who is having any right, किसी भी अगर किसी का राइट होगा किसी कॉज ऑफ किसी चीज को लेकर, कॉज ऑफ एक्शन को लेकर, या किसी भी कोई कॉज होगा या कोई इशू होगा, ये हमेशा इशू से रिलेटेड उसका कोई राइट होगा। इफ आई टॉक अबाउट दैट, इफ यू वांट टू टेक पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी का पोजेशन लेना है, और यू आर थ्री ब्रदर्स, ब्रदर ए, ब्रदर बी एंड ब्रदर सी। सो ये राइट जो है तीनों का है, ए बी सी तीनों का। So these three of them can act as a party, as a plaintiff within a suit। Now it is written that they apply jointly, या तो jointly भी apply कर सकते हैं, severally और alternative। और severely भी apply, they may apply severely, or alternative means when your question of law is different, then you apply for a different suit, or if the question of law, this is separate suit, common question of law। अगर आप सेपरेट सूट फाइल करते हैं उसी से लेकर, मान लो ए बी सी, थ्री ऑफ देम हैविंग सेम पोजीशन, अगर ये सेपरेट सूट फाइल करते हैं, और क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है कॉमन, कि प्रॉपर्टी शुड बी डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग दीज थ्री ऑफ देम, डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग थ्री ऑफ देम। तो ये दोनों का होना एसेंशियल है। दिस कंडीशन इज वेरी एसेंशियल फॉर द पर्पस ऑफ दिस। मीन्स आपका फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट होना चाहिए, सेकंड कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग मैं और एग्जांपल्स लेता हूँ, दैट सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर मैनर। So for example, if you that 2A B enters into contract with C for the purchase of 100 tins। ओके, 100 टिन्स के लिए परचेस के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट कराए, पर एट द एंड टाइम एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अमाउंट भी दे दी, बट सी इज राइट नाउ नॉट गिविंग दीज 100 टिन्स इन द परचेस। So what is there? Common question of law. Right is what? They want 100 things. This is the right. And what is the question of law? Question of law is there. The contract हुआ था दोनों के बीच. According to contract, contract is not, agreement is proper. So the tin should be transferred. 100 tins should be transferred to the concerned person. So this is the. So both of these take into consideration right and common question of law. I'll take one example related to rule number 1. That A, that what happens, A makes contract in the year, for example, I take today day,
dates that is 5th of November 2022, and he sell this into 5th of January 2023 100 tins at the rate at this particular rate. वो दो 2023 में सोल्ड करेगा 100 टिन्स को. अभी क्या हुआ on the day of C भी आया, then C said that I want also want the tins at the rate of during that period of time of 5th November 2022. सी भी फाइल कर देता है बी के साथ कंपाइल करके, मीन्स जॉइंडर बनके. तो व्हाट हैपन, वो इस चीज को कंसीडर नहीं करेगी क्योंकि कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ तो है, पर सी का राइट नहीं. तो कॉन्ट्रैक्ट जो फॉर्म हुआ है दैट फॉर्म बिटवीन ए एंड बी, नॉट बिटवीन ए एंड सी. दैट्स व्हाई. So this rule one is actually is a joinder of plaintiffs. If I consider rule number two, what rule number two is indicating that whenever any plaintiff, मान लो 10 plaintiffs हैं, 10 plaintiffs join as a joinder, उन्होंने एक साथ पूरा सूट किया है फाइल, इनमें से one or either two, जितनी भी two plaintiff, what they are doing, they delaying the proceedings of the court, or because of that embarrassment happens within the court, delay and embarrassment, और वो उसकी वजह से proceedings properly नहीं चल पा रही. So what court can do, court the court order the separate trial for those 2-3 persons who are doing delay of the proceedings. तो रूल नंबर 2 है जहां पर भी वो हैवॉक करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे प्लेंटिफ और डिले करेंगे प्रोसीडिंग्स को, और प्रोसीडिंग्स को नहीं होने देंगे, तो जो डिले कर रहे हैं उनके लिए सेपरेट ट्रायल्स ऑर्डर कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, बिकॉज ऑफ दैट ऑर्डर orders that proceeding should be expedient and takes place within a faster manner. So that is the purpose of this rule number 2. What happened within the first rule number 1, the plaintiff is asking for the relief. Now rule number 3 and 3A are linked one. So within the 3A, the relief is asking against the whom, against the defendant से relief मांगा जाएगा, but that relief should be in same transaction. तो transaction से होना चाहिए, same होना चाहिए, same act होना चाहिए, series of act, मतलब पूरा का पूरा एक सिंगल सीरीज में चलना चाहिए, यानी कि one transaction takes place here and second transaction is takes place in on another day, but it should be another date also, but it should be interlinked, एक दूसरे से linked होना चाहिए. ये नहीं both of the question of law are separate or shouldn't be separate, should not be separate, it should be always same. So any right jointly, severally or alternative, मान लो 10 लोग हैं, 10 persons are there, same against whom right is asking, right is asking by any plaintiff, then the question of law should be also there, that should be same. Rule 3AB is also indicating a separate trial or delay in embarrassment. जब भी defendant during the proceeding create any embarrassment or delay the proceeding or create hindrance during the proceeding, then what happens? There should be a separate trial for those persons who actually defendant who actually create problems or hindrance within the proceedings. One example regarding this defendant part, there are two buses, bus B and bus C. Okay, ये दोनों की दोनों क्या करती हैं, कोलाइड करती हैं, एक दूसरे से टकरा जाती हैं, और कोलाइड करने के बाद व्हाट हैपन, अ पर्सन ए get that accident takes place due to the collision of both of these car or bus, whatever is the, take any one example, car, either car or buses. So what happened, ए आइदर ए और या ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव बी और सी दोनों के अगेंस्ट फाइल कर सकते हैं सूट विद इन अ कोर्ट. क्यों कर सकते हैं, कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है, दैट बी एंड सी दैट हिट अ ए hit B and C collide, and due to which hitting of the A takes place and he get died due to that, उसकी उससे डेथ हो गई, due to that. So the common question of law is also there, or even
पार्टीज आर टू, डिफेंडेंट आर टू, बी एंड सी, तो उनके लिए सेपरेट फाइल्स की जरूरत नहीं है, उनको एक साथ जॉइंडर करके, सो इस सेकंड रूल टू को हम बोल सकते, थ्री को हम बोल सकते हैं, दीज आर द जॉइंडर ऑफ द डिफेंडेंट्स. There are two types of parties. One is proper party. Second one is necessary party. Proper party is that party. If that party is not present, even that a judge of the court can give order or decree. But necessary party is the party. If that party is not present, order shouldn't be given. If order given, that shouldn't be acceptable. Necessary party का होना जरूरी है और proper party का होना जरूरी नहीं है. ये next rule is rule number 4. Rule number 4 is that मान लो there are P1, P2, P3, P4, four plaintiffs हैं. Then court may order to give relief to one or more plaintiff. मान लो कोर्ट को लगा that it is essential to give relief only to plaintiff P1 and P2. तो कोर्ट P1, P2 को ही relief देगी और P3 और P4 को relief नहीं देगी. So it depends totally on the court that relief should be given to two plaintiff or three plaintiff. For example, लेता हूँ. Two persons A and B. Okay, A की प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर रखी है उसने C को, और B इज एज अ टेनेंट, रेंट पर रहता है on this property. So C's responsibility is to take care. Okay. Then case that after filing the suit by the A, that B is not B is not to vacant the property of the A, then what happen? B को क्या मिलेगा? A को what A can take? A can take this rent from the property, mean profit also. बट ये चीजें सी को नहीं मिलेंगी. एज अ सी भी उसमें प्लेंटिफ बन सकता है, बट सी को नहीं मिलेंगी. सी को क्या मिलेगा? सी कैन गेट डी वॉट एवर इज द कंपेंसेशन विच अकॉर्डिंग टू मंथली बेसिस एज अ as a compensation he will get on that basis. Now on the second part, relief for one or more defendant, कि एक या एक से ज्यादा डिफेंडेंट को रिलीफ. मान लो प्लेंटिफ ने थ्री डिफरेंट डिफेंडेंट के अगेंस्ट केस किया, B1, B2, केस फाइल किया. तो ऑर्डर में क्या हुआ? विद इन ऑर्डर दैट थ्री ऑफ देम आर डेट, मतलब तीनों ने कर्ज ले रखा था. मान लो P इज एनी बैंक. ओके, P ने पार्टनरशिप, B1, B2, B3 डिफेंडेंट एक पार्टनरशिप फॉर्म है. इसको he had taken 20% limit, and he taken 40%, and he taken remaining 40%. So what happens? Distribution takes place according to the how much amount on what share basis that is taken by the defendant. That means कर्ज लिया है या फिर लोन लिया है बैंक से. So 20% मान लो 1 CR, तो 20 लाख का इसका होगा और प्लस इंटरेस्ट. सिमिलरली 40 लाख प्लस इंटरेस्ट और रिमेनिंग 40 लाख प्लस इंटरेस्ट. So relief from to one or more plaintiff or relief for one or more defendant means ऐसा नहीं होगा कि B1 को ही पूरा अमाउंट लोन का पे करना. It should be distributed or separated according to the whatever is the share. Next is rule number 5, claim or objection. इसको रीड करते हैं. डिफेंडेंट नॉट इंटरेस्टेड, मतलब डिफेंडेंट इज इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट. मान लो दैट defendant had taken loan from plaintiff. Plaintiff said that he had taken a loan of amount rupees 10 lakh. 10 lakh का लोन लिया with the interest rate of 16%. पर डिफेंडेंट बोलता है यस मैंने 10 लाख का लोन तो लिया है, पर इंटरेस्ट रेट जो था 14% से दूंगा, मैं 16% से नहीं दूंगा. मीन्स जो क्लेम किया है ऑब्जेक्ट और जो प्लेंटिफ ने, तो उसको काउंटर
ऑब्जेक्ट कर सकता है डिफेंडेंट, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मच ऑफ परसेंट ऑफ this much percent of this amount of interest. Instead of 16, I am liable for only 14%, not more than that. So this is actually what claim of objection by the plaintiff, no, not by the plaintiff, by the so is not so defendant is not interested in all the claims. He is interested in the claim which he actually thinks so that it should be given. Now, rule number 6. Rule number 6 is related to our contract. जो भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, तो जितने भी प्लेंटिफ होंगे वो सारे के साथ एक साथ ज्वाइन हो जाएंगे. मान लो someone is doing a business related to real estate. रियल एस्टेट रियल एस्टेट में वी हैव सीन, और हमने देखा भी है, वी हैव सीन दैट देयर आर 3 to 4 persons make a contract and purchase a single. Okay. So once they make a contract that we are holding this percent of shareholding we have within the property. Now what happened? They together joined as a jointer. उनको सेपरेट सूट फाइल की करने की जरूरत नहीं है. हम ये प्रोविजनरी नोट में भी देख सकते हैं. जो भी हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड जो भी चीज है ना, वो इसके अंदर आ जाएगी सारी की सारी. नेक्स्ट वन इज whom redress. Whom redress means to whom claim should be asked. हमें पता नहीं है from whom we can ask the claim. हमें claim किससे मांगना चाहिए और कौन कौन claim मांग सकता है, मतलब which plaintiff ask from which defendant, और and how many number of defendant I should ask for this specific claim that the plaintiff doesn't know about. Rule number 7, plaintiff is having a doubt from whom he may ask claim. कि वो claim के लिए किस defendant से पूछे. Then in that case he join two three defendant, 2-3 defendant को वो join कर सकता है, और accordingly court may decide from whom what actually from whom he is liable to get the claim. Claim वो किससे लेगा, then it may be decided. In this video, I'll discuss only rule 1 to 7. In next video, I will move further 8 to 30. So thank you very much.